बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ हाइब्रिड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। व्यूवर्स, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 इम्पॉर्टेंट MCQs स्टार्ट कर चुका हूँ। 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, ये पार्ट नंबर 6-7 है। व्यूवर्स, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1, एज पर सेक्शन 2E ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट, एंटी टेररिज्म कोर्ट मीन्स द कोर्ट एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, 13 ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। क्वेश्चन नंबर 2, एज पर सेक्शन 2C ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 कोड मीन्स, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते। अंडर सेक्शन 2A ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 आर्मर्ड फोर्सेस मीन आर्मी, एयरफोर्स, नेवल एंड रिजर्व फोर्सेस। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 एक्सटेंड्स टू होल पाकिस्तान, और एक्सटेंड का मतलब भी यही है, वसी या फैला हुआ। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 कंसिस्ट डैश 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 सेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, 40 सेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन डैश डैश ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर एक्ट। व्यूअर्स, ये डील्स है फॉर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, 7। सेक्शन 7 एंटी टेररिज्म ऑफ एक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, a person who has committed an offense जुर्म को कहते हैं, of terrorism under the anti-terrorism act 1997 and is or has been concerned in the commission, preparation or investigation of an act of terrorism is called, ऑप्शन बी टेररिस्ट इसको कहते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, whoever involves in kidnapping for kidnapping for reason, hostage taking or hijacking, he committed offense of ऑप्शन सी टेररिज्म। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। व्यूवर्स, ये MCQs आने वाले जितनी भी टेस्ट है जिसमें एंटी टेररिज्म एक्ट का सिलेबस हो, स्पेशली ETEA के थ्रू जितनी भी टेस्ट होते हैं जिसमें एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 हो, तो उसमें उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेररिज्म इज डील्ड बाय सेक्शन डैश 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 ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, सेक्शन 6। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़े। सेक्शन 5(1) of the Anti-Terrorism Act 1997 empowers armed forces or civil armed forces to use dash 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 for prevention of terrorist acts and scheduled offences। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, इसको कहते हैं फोर्स। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर सेक्शन 4B if an order or acquittal, व्यूअर्स एक्वाइटल कहते हैं रिहाई या वरीयत, is passed by an anti-terrorism court in any case instituted upon complaint and the high court on an application made to it by the complainant in this behalf grant special leave to appeal from dash 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 days present such an appeal to high court। इसके लिए जो रिक्वायर्ड डेज है वो 20 है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, एज पर सेक्शन
4(2) of the Anti-Terrorism Act 1997, if the opinion of the provincial government the presence of armed forces or civil armed forces is necessary in order to prevent the commission of terrorist acts or scheduled offences in any area, it may request to dash dash dash. Option A इसमें correct option है federal government for armed force or civil armed forces. Question number 13 की तरफ बढ़ते हैं. Section 2Z of the Anti-Terrorism Act 1997 deals with definition of a dash 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 terrorist investigation. Option C इसमें correct option है. Question number 14. As per Section 2D of the Anti-Terrorism Act 1997, child means a person who at the time of commission of the offence has not attained the age of dash dash dash. Option C 18 years. Question number 15. As per Section 2B of the Anti-Terrorism Act 1997, civil armed forces means dash dash dash. Question number 15 में फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी फ्रंटियर कोर और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड पाकिस्तान रेंजर बोथ ए एंड बी. ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 16. Section dash 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 of the Anti-Terrorism Act 1997 deals with definition. Option B Section 2. Question number 17. 17 की तरफ बढ़ते. The Anti-Terrorism Act 1997 was assented. Assented का मतलब है मंजूर करना. Assented to by the President on dash dash dash. Question number 17 में ऑप्शन ए 16 अगस्त 1997. Question number 18. Section 11A of the Anti-Terrorism Act 1997 deals with dash dash dash. Option A organization concerned in terrorism. Option A. Question number 19. Section 10 of the Anti-Terrorism Act 1997 empowers dash 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 to enter for search. Question number 19 में police under the code, civil armed force, armed forces. All of the above is the correct option. Question number 20. Section 9 of the Anti-Terrorism Act 1997 provides punishment for contravention of section dash dash dash. Viewers, the contravention कहते हैं खिलाफ वर्जी को. ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है 8. Section 9 of the Anti-Terrorism provide punishment while contravention के लिए Section 8. Part number 7 इस वीडियो का. An anti-terrorism court shall consist of a judge being a person who dash dash dash. Option A is a judge of high court or has been a session or additional session judge. Option A इसमें correct option है. Question number 2 की तरफ बढ़ते. Under Section 13(1), power of specification of area for establishment of anti-terrorism court is enjoyed by option B. Option B इसमें correct option है concerned high court. Question number 3. Section dash 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 of the Anti-Terrorism Act 1997 deals with establishment of anti-terrorism court. Option B 13. Section 13. Question number 4. Section 11R of the Anti-Terrorism Act 1997 empowers dash 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 to apply to the court for forfeiture. Question number 4 में ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है अथोराइज्ड ऑफिसर. forfeiture जब्ती को कहते हैं. forfeiture मीन जब्ती. Question number 5. Under Section 11P, the officer or person referred to under subsection 1 of Section 11O may apply to a court for an order to. Question number 5 में option A seizure of money or other property. Seizure of money mean रकम की जब्ती. Question number 6.
क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है सेक्शन डैश 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 बाउंड्स एवरी वन टू डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब है जाहिर करना इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेररिज्म। ऑप्शन ए 11L, सेक्शन 11L डील कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन डैश डैश ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 डील्स विद फंडिंग अरेंजमेंट फॉर टेररिज्म। व्यूवर्स ये सारे MCQs आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इंशाल्लाह इंटेलिजेंस ऑफिसर का टेस्ट आप लोगों का बहुत अच्छा होगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। 11J, सेक्शन 11J डील कर लेता है फंडिंग अरेंजमेंट टू फॉर टेररिज्म। क्वेश्चन नंबर 8 whoever uses money or other property for the purpose of terrorism he committed offense under section dash 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 of the anti-terrorism act 1997। 11I इस पे लगेगा, ऑप्शन बी। Question number 9 any person who commits an offense by using uniform of a prohibited organization shall be punished with imprisonment for a term which may extend to dash dash dash। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है 5 years। क्वेश्चन नंबर 10 a person is guilty of an offense if he belongs or profess to belong proscribed organization he shall be punished with imprisonment for a term which extend to क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन ए 6 month, 6 month करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 द टाइम लिमिटेशन फॉर फिलिंग इन अपील बाय अ पर्सन affected by section 11E1S is dash 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 days। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन बी 30 days। क्वेश्चन नंबर 12 is security for good behavior is dealt by option C both A and B is the correct option है। क्वेश्चन नंबर 13 under section 11EEE of the anti-terrorism act 1997 the government may pass detention order of dash 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 days 30 days। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 preventive detention for inquiry is dealt by section dash dash of the anti-terrorism act 1997। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है 11EEE। क्वेश्चन नंबर 15 section dash dash of the anti-terrorism act 1997 deals with observation order। ऑप्शन बी 11D सेक्शन डील कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते एज पर सेक्शन 11C2 ऑन ऑर्गेनाइजेशन हुज रिव्यू एप्लीकेशन हैज़ बीन रिफ्यूज्ड अंडर सेक्शन 11CI में फाइल an appeal before dash 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 against the order of the federal government। option A high court, before high court। question number 17 section dash dash of the anti-terrorism act 1997 deals with right of review of prescribed organization। option B 11C। व्यूवर्स ये कंबाइन पार्ट था, मज़ीद 2 पार्ट रहते हैं, वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया।